सत श्री अकाल। इंडिया प्लस यूएसए देख रहे सब दर्शकों का मैं मनप्रीत को स्वागत करती हाँ। इराक ते अमेरिकी दूतावास ते वड्डा हमला, ईरान च दागियां गईयां 12 मिसाइलां। बर्फीले पहाड़ां ते आईटीबीपी के जवानों ने खेडी कबड्डी, वीडियो हुई वायरल। 5 सूबियां च करारी हार तो बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सद्दी मीटिंग। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हस्पताल पहुंच जख्मी फौजियों नाल कीती मुलाकात। संसद च बजट सैशन की शुरुआत, यूक्रेन के मुद्दे ते हंगामा होने की संभावना। कैनेडा के टोरंटो शहर च होया भयानक सड़क हादसा, 5 विद्यार्थियों की हुई मौत ते 2 जख्मी। रूस ते यूक्रेन जंग विचाले 4 हथियारबंद फौजियों नाल भिड़ गया निहत्था बजुर्गों का जोड़ा। आओ शुरुआत करते हाँ अज की इस पहली वड्डी खबर तो। इराक ते अमेरिकी दूतावास ते वड्डा हमला, ईरान च दागियां गईयां 12 मिसाइलां। इराक के इरबिल च अमेरिकी दूतावास से 12 मिसाइलां दागियां गईयां हैं। अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अमेरिकी रक्षा अधिकारी ने दस्सिया है कि इरबिल शहर ये मिसाइलां गवांढी देश ईरान तो दागियां गईयां हैं। इस मिसाइल हमले नूं लैके इराक और अमेरिका दोवां वल्लों बयान जारी किया गया है। एक होर अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि कोई नुकसान नहीं होया अते कोई जानी नुकसान भी नहीं होया। इराकी अधिकारियों का कहना है कि कई मिसाइलां अमेरिकी दूतावास नूं निशाना बनाया गया है। दूतावास की यह इमारत नवी है अते हाल ही विच इत्थे स्टाफ शिफ्ट होया है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा है कि अजे तक ये पता नहीं लग सकिया है कि कुल कितनियां मिसाइलां दागियां गईयां हन अते कितनियां जमीन ते डिगियां हन। यह घटना अद्धी रात तो बाद वापरी है अते भारी नुकसान होने का खदशा है। इस घटना दीयां कई वीडियो सोशल मीडिया ते सामने आईयां हन। वीडियो विच दस्सिया गया है कि मिसाइल डिगण कारण कई धमाके होए हन अते अमेरिकी दूतावास के परिसर विच भयानक अग लग गई है। वीडियो विच धमाके दी आवाज़ां भी सुनिया जा सकदियां हन अते अग भी दिखाई दे रही है। एक इराकी अधिकारी ने दस्सिया है कि बैलिस्टिक मिसाइलां ईरान तो दागियां गईयां सन। हालांकि अधिकारी ने इस मामले विच होर वेरवे नहीं दिते हन। अमेरिका ने इस घटना की निंदा करते हुए इसनूं इराक की प्रभुसत्ता के खिलाफ एक घिनौना हमला और हिंसा का प्रदर्शन करार दिता है। दमिश्क नेड़े इजरायली हमले तो कुछ दिन बाद होया है, जिस विच ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के 2 मैंबर मारे गए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बुधवार के हमले की सख्त निंदा की है और बदला लैण की सौं खाधी है। سر کوردستانی سوچوار بەدە خۆزیانێکی زۆر بەرباڵەخانەی تەلەڤیزیۆنەکە کەوتووە. کارمەندان سەلامەتن، سوپاس بخوا. बर्फीले पहाड़ां ते आईटीबीपी के जवानों ने खेडी कबड्डी, वीडियो हुई वायरल। साडे देश विच भारतीय फौज अते अर्ध सैनिक बलों के जवानों नूं देश भर विच हर किसी का प्यार मिलता है। अक्सर ही सोशल मीडिया ते फौजियों दी वीडियोज़ देख के हर कोई देश प्रति प्यार नाल भर जाता है। इस दे नाल ही फौज अते जवानों दी वीडियोज़ सोशल मीडिया ते तेजी नाल वायरल हुंदियां नज़र आ रही हैं। फौजियों नाल जुड़ी वीडियोज़ नूं देख के हर कोई देशभक्ति नाल भरिया नज़र आ रहा है। हाल ही विच सोशल मीडिया ते एक अजिहा वीडियो सामने आया है जिस नूं देख के हर कोई रोमांचिक हो रहा है। इन्हीं दिनी देश के कई हिस्सों विच कबड्डी का क्रेज़ वधिया होया है। इस दे नाल ही कबड्डी का रंग आईटीबीपी के जवानों ते भी चढ़ता नज़र आ रहा है। आम तौर पर देश के बहादुर सैनिक अपने शरीर को फिट रखने लिए कई तरह दी खेडां खेडते देखे जाते हैं। इस दे नाल ही सामने आया ये वीडियो काफ़ी उत्साह वधा रहा है। वीडियो विच आईटीबीपी के जवान बर्फ नाल ढकी पहाड़ी ते कबड्डी खेडते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो नूं आईटीबीपी के अधिकारित ट्विटर अकाउंट राਹੀਂ साझा किया गया है, जिस दे नाल कैप्शन विच जानकारी दी गई है कि यह सिपाही हिमाचल प्रदेश विच बर्फ नाल ढके हिमालय विच कबड्डी खेड रहे हैं। वीडियो च जवान विरोधी टीम के कोर्ट च जाके दाऽ लगाउंदे नज़र आ रहे हैं, जिसनूं देख के हर कोई खुश हो रहा है। खबर लिखे जान तक सोशल मीडिया ते इस क्लिप नूं 78,000 तो वध व्यूज़ मिल चुके हैं। इस दे नाल ही वड्डी गिनती च यूजर इस नूं रीट्वीट कर रहे हैं। यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियावां दे के जवानों का उत्साह वधाउंदे नज़र आ रहे हैं।
ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹੈ। To the working committee about the election results and entire electioneering process. After that, Congress working committee members, including all the senior leaders, openly participated in the discussion to analyze the results. It was a sincere discussion, very fruitful discussion happened in the working committee, and working committee unanimously accepted a statement which I am going to read out. The recent assembly election results of 5 states are a cause of serious concern for the Indian National Congress. The party accepts that due to shortcomings in our strategy, we could not effectively expose the misrule of BJP state governments in 4 states and overcome the anti-incumbency in the state of Punjab in the short time after effecting a change of leadership. Congress party represents the hope of millions of Indians against political authoritarianism prevailing in the country today, and the party is fully conscious of its immense responsibility. The CWC expresses its gratitude to millions of Congress workers and leaders across the 5 states who work tirelessly for the party and its candidates. While humbling accepting the electoral verdict of the latest round of assembly elections, the Congress party assures its workers and the people of India that it will continue to remain a vigilant and vibrant opposition. Congress party will fully prepare to face the electoral challenges in the election-going states in 2022 and 2023, as well as in the Lok Sabha election 2024. CWC unanimously reaffirms its faith in the leadership of Srimati Sonia Gandhi and requests the Congress President to lead from the front, address the organizational weakness, effect necessary and comprehensive organizational changes in order to take on the political challenges. And CWC also decided to have a detailed deliberation of the party strategy and way forward in the upcoming elections in 2022, 23 and 24. A Chindan Shivir of the senior leaders will be held immediately after the current parliament session. Before the Chindan Shivir, the CWC will meet once again to discuss the matters to be taken up in the meeting, including the organizational changes and the strategies. Honorable Congress President will immediately take up the immediate correction measures to revamp and re-strengthen the organization. This is what we decided today's working committee. बहुत बहुत शुक्रिया महासचिव संगठन श्री केसी वेणुगोपाल का। आदरणीय साथियों, बहुत संक्षिप्त में अगर मैं ये कहूँ, जैसा वेणुगोपाल जी ने बताया, आज लगभग 5 घंटे तक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के इस प्रांगण में हुई। बहुत लगभग सभी नेताओं ने बड़े खुले मन से अपने अपने विचार रखे, बड़े खुले मन से चर्चा हुई।
जहाँ जहाँ हमारी कमियां हैं और जहाँ जहाँ हमारी ताकत हैं, उन सब का गहन चिंतन से अवलोकन किया गया। खुले मन से और साफ दिल से उस पर चर्चा हुई। सभी नेताओं ने अपने विचार रखे और उस सारी मंत्रणा का जो सार था वो एक कांग्रेस कार्य समिति के बयान के तौर पर श्री केसी वेणुगोपाल जी ने आपको पढ़कर सुनाया है। उसका हिंदी रूपांतर मैं आपको बताऊंगा। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा जारी वक्तव्य। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए गंभीर चिंतन का विषय है। पार्टी का यह मानना है कि अपनी रणनीति में खामियों के चलते हम जहां 4 राज्यों में भाजपा सरकारों के कुशासन को प्रभावी ढंग से उजागर नहीं कर पाए, वहीं पंजाब राज्य में नेतृत्व बदलाव के बाद मिले सीमित समय में सत्ता विरोधी लहर पर काबू नहीं पाया जा सका। कांग्रेस पार्टी देश में आज व्यापक राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ करोड़ों भारतीयों की आशाओं का प्रतिनिधित्व करती है और अपनी इस जिम्मेवारी के प्रति पूरी तरह से सजग और जागरूक है। कांग्रेस कार्य समिति लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती है, जिन्होंने 5 राज्यों के इन चुनावों में पार्टी और उसके उम्मीदवारों के लिए अथक परिश्रम किया। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और भारत के लोगों को आश्वस्त करती है कि वह विधानसभा चुनाव के इस जनमत को विनम्रता से स्वीकार करते हुए एक सतर्क और जीवंत विपक्ष की भूमिका निभाएगी। कांग्रेस पार्टी भविष्य में होने वाले 2022 और 2023 के राज्यों के चुनाव एवं 2024 के लोकसभा व राज्यों के चुनाव की चुनौतियों से मुस्तैदी से निपटने के लिए तत्परता से हर तैयारी करेगी। कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति से श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि की और कांग्रेस अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे आगे बढ़ पार्टी का नेतृत्व और मजबूती से करें एवं आवश्यक तथा व्यापक संगठनात्मक बदलाव करें तथा राजनीतिक चुनौतियों का सामना करने के लिए संगठन की सभी कमजोरियों को दूर करें। जैसा आदरणीय वेणुगोपाल जी ने बताया, इस वक्तव्य के साथ साथ कांग्रेस कार्य समिति ने यह भी निर्णय लिया कि संसद के इस सत्र के ठीक बाद, बहुत जल्द खत्म होते ही सत्र की समाप्ति के फौरन बाद, एक व्यापक चिंतन शिविर कांग्रेस पार्टी बुलाएगी, जहां भविष्य की रणनीति पर व्यापक परिचर्चा और आगे का रोड मैप निर्धारित होगा। इस बारे में इसी माह के अंदर कांग्रेस कार्य समिति की एक और बैठक भी बुलाई जाएगी। कोई सवाल आप पूछना चाहें तो अब स्वागत है। देखिए, जब चिंतन होता है कार्य समिति में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इसीलिए सार्वजनिक नहीं है, पर उस चिंतन का जो पूरा निचोड़ निकला है वो केसी वेणुगोपाल जी ने आपको पढ़कर बताया। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारी बातें कही, पर एक बात बगैर किसी लाग लपेट के, बगैर किसी कॉमा फुल स्टॉप के सामने थी कि कांग्रेस कार्य समिति के हर सदस्य ने श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए उन्हें ही मार्गदर्शन करते रहने के लिए कहा जब तक कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव संपन्न ना हो जाए।
lots of deliberations took place in the Congress Working Committee in a free and frank fashion. Congress Working Committee deliberations and every single sentence spoken by every honorable member of the CWC is not open to media and outside friends. The conclusion of the deliberations of the Congress Working Committee have been read out to you by the Honorable General Secretary Organization, Shri K.C. Venugopal, Hindi version of which I read out for you. One thing every single member of the Congress party was unanimous upon, that only and only they have absolute faith in the leadership of Shrimati Sonia Gandhi, and Sonia Gandhi ji shall continue to lead us until the conclusion of the organizational elections, and there cannot be a whisper otherwise on any such front of leadership. Ma'am, you wanted to ask something. I'll come to you after. 5 hours of deliberations on the poll debacle. I just wanted to know broadly what were the points that were pinpointed for the reason behind the loss of the party, as you yourself admitted that you were unable to dislodge the BJP despite anti-incumbents. If you could give us few points. Ma'am, a comprehensive report was submitted by each of the in charges of the 5 election going states. Whether it was Shri Harish Chaudhary for Punjab, and then Shri Ajay Makhan, who was chairman of the screening committee in Punjab, whether it was Shri Devendra Yadav in charge of Uttarakhand, or Shri Harish Rawat, who is a former chief minister and chairman of the campaign committee in Uttarakhand, whether it is Shri Dinesh Gundu Rao in charge of Goa, and Shri P. Chidambaram, who is a senior observer for Goa, whether it is Shri Bhakta Charan Das, who is in charge of Manipur, and Shri Jairam Ramesh, who is a senior observer for Manipur, whether it is Srimati Priyanka Gandhi Vadraji, who is in charge General Secretary for State of Uttar Pradesh, and of course, the many former in charges, and Shri Bhupesh Baghel, I'm sorry, I stand corrected, senior observer for Uttar Pradesh. So each one of them presented their reports to the Congress Working Committee, gave out detailed reasons of what they felt were the pluses and the minuses for the party. Also gave out detailed reasoning of what, according to them, as also according to the senior observer of the party in the respective state, went wrong, where does the party need to be strengthened, what is it that needs to be set right, and what, according to them, should be the course corrections for the future in those particular states. Many former general secretaries, for example, the former General Secretary in charge of UP, Shri Ghulam Nabi Azad, Shri Digvijay Singh, many of them also chipped in with their suggestions, also gave out their own experiences of when they had failed in those respective states. So it was a healthy, free and frank discussion. देखिए, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव इस समय चल रहा है और आदरणीय महासचिव संगठन कई बार बता चुके कि वो 20 अगस्त जो है कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निश्चित है, और मैं एक से अधिक बार आपको ये बात कह चुका कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता और हर नेता ये चाहता है कि श्री राहुल गांधी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व करें, पर कांग्रेस का संगठनात्मक चुनाव है, संगठनात्मक चुनाव के माध्यम से ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष का निर्णय होगा। यस सर। पिछली बार जब चुनाव कांग्रेस हारी थी तब एक समिति गठित की गई थी अशोक चव्हाण, क्या उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? और दूसरा
या ये 5 राज्यों को लेकर कोई समिति गठित करी गई है? आदरणीय मित्र, बहुत सारे, जैसा मैंने कहा, विस्तृत चर्चा 5 घंटे तक इन 5 राज्यों पर हुई। सारी रिपोर्ट्स कांग्रेस कार्य समिति के सामने ही रख दी गई, ना केवल प्रभारी महोदय द्वारा बल्कि जो इंचार्ज एआईसीसी ऑब्जर्वर्स हैं उनके द्वारा भी, और महासचिव संगठन जिनको डे टू डे का वहाँ का तजर्बा है उनके द्वारा भी। तो इसलिए अब उसमें और ज़्यादा जो चर्चा करके हमने निष्कर्ष निकाला है वो निष्कर्ष आपके सामने है। थैंक यू। ओके, लास्ट क्वेश्चन। Already that is I that is think in the let me point out what the Honorable General Secretary organization read. If I draw your attention, and since you don't have the statement in front of you, and it reads, I reiterate the last para, the CWC unanimously reaffirms its faith in the leadership of Shrimati Sonia Gandhi and requests the Congress President to lead from the front, address the organizational weaknesses, affect necessary and comprehensive organizational changes in order to take on the political challenge. Okay. Thank you. So grateful and apologize for keeping you guys waiting for long. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਖਮੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਰੂਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਲੀਡਰ ਵਾਂਗ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਆਦਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉਤਰ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਿਲੋਦਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕੀਵ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਇਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਪੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। Як відділення полковник академік академічних наук Генеральної юрисдикції Лурін. Ми переможемо. 100%. Добрий день, бажаю здоров'я. Ну як ви, хлопці? Хорошо. Та не хорошо. Хорошо. Нормально? Молодці, дуже круто. Міцні хлопці. Давно? А нещодавно. Нещодавно? 5 числа. Ні, 6 мабуть. 6. Вода 100 минут? Міна. Під Ірпінем. Чим можемо допомогти? Достається, салат отлично. Да. Заботиться. Супер. Почала готувати на стіл, накривати будемо і за перемогу, і за мир. Тесть вас дуже люблю, поважає. Дякую. Дякую. Указом Президента України за мужність, самовіддані дії, виявлений захист державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військової присязі, нагороджено медаллю за військову службу України. Дякую вам. Одужуйте. Сил вам, ви молодці. Заради вас і на ваших плечах все це. Це найголовніше. Старший солдат Петрович.
Поправляем? Поправляйте обязательно. Это важно. Входження грудного відділу позвонка, був гемопневмоторакс, хеморагічний. Ну, правда, Добре. ці зонди, які в носі стоять, їх помаленьку треба зразу не можна. Ну, поборемося, виходимо. Вы молодцы. Зробимося. Терроризм. Як? Слабкість поки що. І ще один раз. Міцний народе нашої незламної країни. Сьогодні 18-й день. 18-й день нашої війни за життя, за Україну, за незалежність. Початок сьогоднішнього дня був чорним. Російські ракети та авіабомби знову били по нашій державі. Від сходу до заходу. 30 ракет на одну тільки Львівську область. Внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки загинуло 35 людей. Ще 134 людини отримали поранення. Там не відбувалось нічого, що могло би загрожувати території Російської Федерації. І всього лише у 20 кілометрах звідти кордони НАТО. В минулому році я чітко попереджав лідерів НАТО, якщо не буде жорстких превентивних санкцій проти Російської Федерації, вона піде війною. Ми були праві. Я говорив протягом довгого часу, Північний потік – це зброя, яка ударить по всій Європі. Тепер це очевидно. І зараз я повторюю знову, якщо ви не закриєте наше небо, то це лише питання часу, коли російські ракети впадуть вже на вашу територію, на територію НАТО, на домівки громадян країн НАТО. Сьогодні у Київській області був убитий американський журналіст Брент Рено. Його колега поранений. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять, але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять. На сході нашої країни окупанти вирішили демілітаризувати і денацифікувати Святогірську лавру Української православної церкви, Московської патріархії. На час удару на території монастиря знаходились тільки монахи та сотні біженців. Жодної військової цілі у лаврі чи поряд з нею не було. Але російські військові не зупиняються навіть і перед ударами по лаврі. Один лише цей факт демонструє, що вся ідеологія Російської Федерації є просто брехнею. Сьогодні я відвідав наших хлопців, наших захисників, які відновлюються після поранень у військовому госпіталі. Поговорили, вручив нагороди, ордена, медалі за мужність, за славу для України. І я дуже хочу, щоб моє до них привітання, бажаю здоров'я, спрацювало. Спрацювало сьогодні саме так потужно, як і наші Збройні Сили України, які утримують ключові рубежі. Вже 18 днів. До речі, в цьому ж госпіталі лікують і російського військового з Рязані. Він в одній палаті з нашими захисниками. Отримує ту ж саму допомогу. Так, від тих же лікарів. Попри те, що робив цей хлопець проти нас, проти України. Але лікарі України його врятували. І це зрозуміло, бо вони люди, не звірі. І маємо пройти цю війну так, щоб залишились ми всі людьми. Я вдячний усім лікарям, медичним сестричкам, які працюють у Києві, у Дніпрі, у Вінниці, у Львові, в Чернігові, на Донбасі, у Харкові, у Мелітополі, у Маріуполі. Усім військовим госпіталь міста Маріуполь, військовий мобільний госпіталь міста Покровськ, військовий мобільний госпіталь міста Часів Яр, військово-медичний клінічний центр Східного регіону, військовий госпіталь міста Черкаське, військово-медичний клінічний центр Центрального регіону місто Вінниця, військово-медичний клінічний центр Західного регіону місто Львів, військово-медичний лікувально-реабілітаційний центр. Вийшов з Ірпеня, але продовжує працювати. Всім вам щира подяка від усіх нас, від усіх українців
Заїжджав сьогодні і на блокпости. Не хотів, щоб це було дуже публічно. Просто підтримати наших хлопців, поговорити. Мужні хлопці, веселі, які захищають Київ і знають, що ми переможемо. Відчувається це. Переможемо завдяки тому, як тільки ми, українці, вміємо гуртуватись, вміємо завжди пам'ятати про своїх. Своїх по духу, по серцю, по щирості. Зустрів там на блокпосту надзвичайну людину, яка щоденно підтримує наших захисників, щоденно привозить їм каструлю з борщем. Справді смачним, справді українським, просто від душі. І я знаю, що саме на таких людях століттями тримається наша держава. Саме завдяки таким людям ми переживемо будь-які чорні дні. Бо ми разом і ми завжди захищаємо своїх. І своє. Не за гроші, без примусу. Не як ті, хто прийшов до нас, а тому, що ми українці. Важливі міжнародні переговори. Болгарія, Словаччина, Чехія, Румунія, Польща, Британія. Відчуваємо підтримку цих країн. Відчуваємо підтримку нашої армії. Це важливо. Говорив також із Шарлем Мішелем, президентом Європейської ради, про нашу європейську перспективу, яка стає реальністю. Тепер щодо переговорів з Російською Федерацією. Щоденно у відеоформаті говорять представники наших делегацій наших країн. У нашої делегації завдання чітке – зробити усе, щоб відбулася зустріч президентів, зустріч, яку, я впевнений, очікують люди. Зрозуміло, що це складна історія, тяжкий шлях, але шлях потрібний. І наша мета, щоб у цій боротьбі, у цій переговорній, складній роботі Україна отримала необхідний результат. Необхідний для нас, для миру, для безпеки. Щоб ми мали гарантії нормальні і дієві. Не як за Будапештом і не як у нашому небі. А такі, щоб українці могли сказати, ось це працює, ось це гарантія. Говорити потрібно. Спрацювали більше 10 гуманітарних коридорів. Київська область, Луганська область. За добу врятовано 5550 людей. За 6 днів вже більше 130 тисяч. Говорити потрібно. І це також завдяки цим перемовинам. Маємо це розуміти. На жаль, в Маріуполь гуманітарний коридор був перекритий. Знову ми зробили усе, що необхідно. Забезпечили тишу. Російські війська зірвали рух вантажу і автобусів. Але будемо пробувати знову, будемо пробувати ще, доки не зможемо допомогти нашим людям. Бо вони наші. Нашому Маріуполю, героїчному Маріуполю. Українці, українки. Ми проходимо найстрашніше випробування у нашій історії, у нашому житті. Ми захищаємо найдорожче, що в нас є. Ми повинні триматися, ми повинні боротися, і ми переможемо. Я знаю це. Я у це вірю. Слава вам, слава нашим людям, слава нашим героям. Слава Україні! ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। Question number 121, question 121, Sri Anil Desai. Vandana Chauhan ji. She will be presiding over the question. Huh? Women's Day. Thank you. Desai ji. Thank you, Minister to lead Chairperson. the reply. Yes, supplementary. Yeah.
Thank you, You're writing the Vice Chair Master. name flick. Minister, in his answer which has been given in the written reply, has said that to safeguard the passenger interest and ensure the operational viability of the airlines, the fare caps as a special measure, government notified fare caps on this as a special measure during the COVID pandemic. Madam, now that the effect of Russia and Ukraine war, which has seen the severe impact on the crude prices, and that would make air travel unaffordable to the passengers if airfares are not controlled by the government. And not only domestic airlines but international airlines too, government needs to initiate dialogue and resolve this issue or come to a conclusion where it becomes affordable. May I know from the Honourable Minister what steps are being taken by the government in this direction? Thank you. Minister. Madam, through you, I'd like to apprise the Honourable Member that as far as the domestic sector is concerned, as he had mentioned what I had stated in my answer, to protect the interests of the passengers as well as to ensure that there is competition and no predatory pricing, we had instituted this system of airfare caps. As far as the international sector is concerned, that is not something that is in our power to do. However, I am very confident that with the opening up of the international sector, as we have announced on the 27th of March, when the summer schedule comes in of all airlines, there will be enough of a supply of seats, both coming into India and going out of India. And therefore, I think the pricing issue is something that the market will certainly take into account by itself. Second supplementary. Chairman, during the last 2 years of pandemic, thousands of employees from aviation sector have lost their jobs. Not only aviation sector, but ground handling employees also, the workers who work or come from the downtrodden society. They have also lost their jobs. And because of this, thousands of families, literally they are on road and they are pinning all hopes on the government. May I know from the Honourable Minister, is there any move? First of all, they should be, all those jobs who have been lost, they should be restored. And they are pinning hopes on the government. What exactly steps are being taken by the government to see that airlines, did they have talks with the airlines and made any attempt, or are they contemplating to have this kind of measure which would restore the jobs of the employees who have lost their jobs? Thank you. Reply, please. Madam, the member has rightly pointed out that the civil aviation sector should not be concentrated only necessarily on airlines and airports, but on the whole ecosystem. And the ecosystem, as the member has rightfully pointed out, includes ground handling, includes cargo, includes FTOs, flying training organizations, includes MROs. And as we have been seeing that this is a sector which has been affected very, very deeply on an economic front. Globally, it is a sector which has been affected the most in terms of its economic output and in terms of its profitability. Having said that, it is also a sector which has bounced back with equal amount of growth as soon as COVID-1 wave and then COVID-2 wave and now COVID-3 wave have petered out. In the case of COVID-2, we had brought back this sector to 100% capacity on the 18th of October, and I am pleased to report to the House that pre-COVID, our maximum number of passengers in India per day were close to about 4 lakhs. And we reached a level of 3.83 lakh per day in the month of December. So we were very well on our way back to recovery, roughly about 5 or 6% off from pre-COVID levels. But then Omicron came along and we had wave 3.
And again, I am pleased to report to the House today that as of yesterday's numbers, after going down to almost about 1,60,000 passengers a day in wave 3, from the pre-COVID level of 4 lakhs and post-COVID to level of 3.83 lakhs, we have yesterday reached the number of roughly about 3.8 lakh passengers per day. So we are looking at a resuscitance in the sector, and with that resuscitance, we are extremely hopeful that we will also see a rebound in terms of employment opportunities. Dr. Shantanu Sen. Kind attention of all. Louder. Mike. I would like to draw the kind attention of our learned minister to a ground reality that so far maintenance of COVID protocol at different airports is concerned. Passengers are being asked to show their COVID vaccination certificate at some airports. At some airports, they are being asked to show their COVID report of last 24 or 72 hours. And at some airports, they are being asked nothing. So there is a confusion amongst the general passengers. My request and my question before our learned minister is, why don't we bring an uniformity at all the airports of our country? Thank you very much. Madam, through you, I'd like to apprise our learned member. It's a very important point that he has raised. As you're aware that these are decisions that are taken by two centers. One is the Health Ministry at the center, and secondly, the states. This is also a subject which is on the concurrent list, and therefore a diktat cannot be issued by us. An advisory can be issued, and then each state has its own power to decide what the rules need to be. As far as we are concerned, the Health Ministry at the center issued the advisory again on the 10th of February 2022, saying that either the passenger has two choices. Either you upload a COVID negative report from the past 72 hours onto the Air Suvidha portal, or you upload your double vaccination certificate onto the Air Suvidha portal, and that should suffice. Subject, of course, again, as I emphasize, to the state government protocols, because each state government must have that liberty to ensure what the rules should be for that particular state. Shri G.K. Vasan. That the government of India has minimized or restricted flights due to the benefit of the passengers because of COVID-19. Good that it has given good results today. But now, sir, I would like to draw the attention of the respected Honorable Minister that it is time to reschedule flights again. For example, Question, my state, please. Tamil Nadu, Vasanji, coming to the question. point, ma'am. You For have to be example, brief. my state, Tamil Nadu, there are around 5 airports. Vasanji, Trichy you is a will very have to be important brief airport. and only There is the only one question. flight. Vasanji, only the question. There is please. only one flight in the morning and in the evening. Likewise, Madurai, Coimbatore, Thoothukudi, I request the Honorable Minister, rescheduling has to be done for the interest of the passengers after COVID-19, so that the economic position of the country definitely will improve because of the flight service. I This is the request need of all our- the members to be very, very precise so as to be able to accommodate maximum questions. Madam, through you, I'd like to apprise the honorable member that certainly there is a great demand for greater connectivity across all major cities in India. I also do see in the near future civil aviation becoming the backbone of transportation across the country. And therefore, we also are looking at a high level of growth in this sector. The CAGR, the compounded annual growth rate of this sector pre-COVID, because obviously during COVID it went through the most difficult time in its history, is close to about 10.6% per year. However, as I mentioned, Madam, both the domestic sector, we have brought it back to 100% capacity on the 18th of October. Even through the third wave of COVID, we did not restrict capacity. So all airlines were free to operate at 100% capacity. And similarly, on the international sector,
by the order issued last week, we have said that by the summer schedule, which starts on the 27th of March, international sector can also operate at 100% capacity. Now, it is for the free market to choose in terms of the routes, and it is our effort to make sure that we take greater connectivity, as you mentioned, Honourable Member, to Tier 2 and Tier 3 cities, which is what we are endeavouring to do. Shri Praful Patel. The Honourable Minister is trying to see that all the flights are revived, and I've read his statements. At the end of the month, there will be no restriction and flights will go back to normal. I have only one important observation to make and maybe seek a response, is that the fuel prices, they have touched around $130. And we saw in 2008-9, when I was also that time in his position, the fuel prices had reached about $140, $145. And that caused a great deal of financial losses and hardship to all the airlines of India. Led to closure also subsequently of some airlines because those losses were very huge. Today, the price of fuel around 130 and the rupee at 77 compared to 40, 45 then would have, and 45% of operating costs being fuel. I think it is time that the minister, he's trying very hard to reduce tax on ATF, which is levied by the center and the states. I wish that he takes this issue up very seriously, because if the fuel prices continue for a longer period than what it is today, at these levels, it could cause massive losses to airlines and probably even closure of many an airline. I hope he is aware of it and was taking some concrete positive action in this regard. Honourable Minister to respond. Madam, I'd like to thank the member for bringing up this issue in the House. He's absolutely right that fuel consists of not 45% but close to 37% of the cost structure of an airline. And in a sector which is going through a very high level of hemorrhaging losses, close to about 19,000 crores last year due to COVID, that also becomes the proportion of the revenue structure. And so therefore, at high fuel prices, which, if I may just point out, in 2020, prior to COVID, ATF was close to at about 21,000 rupees per kiloliter, which is today at 93,000 rupees per kiloliter. So fuel price itself has gone up close to 4.5 times. And therefore, this is a very, very key issue for us. I would like to thank the member for giving me the opportunity. But as soon as I took over in the month of July, and I'd also like to point out that the states charge VAT on ATF ranging from close to about 10% to 30% on this levels of fuel. And therefore, I took it upon myself to pursue with the states, to plead with the states, our case. The fact that we bring greater connectivity through airlines, the fact that we bring greater economic growth, and therefore, if you look at the Laffer curve example in economics, if you lower tax rates, you will actually increase buoyancy of revenues. And I'm very glad to report to this House that prior to my taking over, we had 11 states that charged VAT rates on ATF between 1 to 5%, and we had 25 states that charged VAT rates between 15 to 30%. That position today, and through you, Madam, I'd like to thank the Chief Ministers of all those states. We have reversed that equation. 12 states have reduced their level of VAT from 25 to 30% down to 1 to 4%. Passed cabinet meetings, issued gazette notifications, and today that equation has reversed. There are 23 states that charge VAT only between 1 to 4%, and only 11 states that charge. Madam, this needs a little bit of your time. I would like to take that liberty from you, because it's a very important point. Sure. And only 11 states that charge between 15 to 30%. This also calls about the confederacy of states, and I'd like to thank all the chief ministers of those states, large states like Madhya Pradesh and Gujarat and Uttar Pradesh, hill states like Himachal, Uttarakhand, Haryana, our island states like Andaman and Nicobar. Many states have done that, and I'd like to thank those administration of those states through you. Thank you, Madam. Question 122.
Mr. John Brittas. 22. Madam, if I may just add one more thing, I'm pursuing with the state of Maharashtra as well. If you could use your good offices and help me, being the former civil aviation minister, I think that would go a long way. Honorable Minister, this is not going on record. It's not going on record. It is not going on. 122. Madam, the minister will certainly, former minister will Kindly certainly lay help. the answer on the table. Madam, a statement is laid on the table of the House. Thank you. Supplementary, please. Madam, today the chair has been very liberal to everybody, and I do expect Madam also to be a little liberal to me, because this is my second maiden question. Question, please. Sir, Question, please. let me congratulate Hardeep Puri Sahab for his contribution to the election victory of the BJP, because he made it a point that the petroleum prices didn't go up during the election time. Honorable member, question. Sir, yes, please. sir. Yes, madam. Sir, Please direct your question. madam, see, from the answer, it has been revealed that there is a double engine looting that is happening. On the one hand, Kindly ask Sir, the question. This madam, is not a speech let me that just you are let me allowed formulate, to- madam. Let me formulate, madam. Only the question. Only the question, please. Okay. In 2021, the government collected 3,72,970 crore in the form of cess and excise duty. I would like to know from the minister, will he stop the practice of bringing in cess and surcharge, which means that he can deny the rightful share of the state governments? And part B of my question is that, since the government had the logic when they increased the tax. Let that come as a second supplementary. No, madam, Honorable madam, this Minister. part B. No, there is no part B. There is only one question. Honorable Minister to reply. Madam, in the spirit of liberalism that my distinguished colleague has referred to, let me also, if you will give me just a minute or two to explain to him how this system functions. Madam, the price of petrol at the retail point or the bunk is determined by the international price, the cost of insurance and freight, the exchange rate, refining margins, and a number of factors. This particular issue on how much cess and tax has been collected has to be seen both in the context of the overall context in which we are operating. The period that he has mentioned, 2021, I should say that 2021 means 1st April of 21 to 31st March of 21. That is precisely the period during which there was a complete lockdown in the economy. That financial year starts on 1st April. The lockdown took place from 25th March, which meant that at that point of time, there was virtually no activity. Now, at that point of time, certain taxes were raised, and they were raised for a particular purpose. But the ultimate test of this is, what is the price at which petrol and petroleum products are supplied to the consumer? And I have a very interesting analysis. Honorable Minister, please be brief so that the second question can Well, be I taken. thought, Madam, if you were, I'm very happy to be brief, but let me also share with him some facts. The fact of the matter is, when the situation so warranted, from 4th November of 21, we brought down the excise on petrol and diesel by 5 rupees and 10 rupees. But I would have thought that all elected representatives should be rejoicing at the fact that the price paid by the consumer has remained steady during that period. But I don't see that. In fact, one prominent youth leader made a statement on 5th March. Honorable Minister, kindly reply to his answer. This is not a debate. Well, just a direct reply to his answer.
Please. I am answering. Please reply the question. I am very happy to answer the Please question, reply madam. the question directly and keep it short. The question is, raising of taxes, levying of taxes are done depending on the situation at that point of time. Okay, Today question we have brought down the Supplementary taxes. number 2. There is teacher, if you are not satisfied with the answer, please follow that. Second supplementary. Give me time. I will try with my limited ability to satisfy him. Sir, this is a questioner. You have to be precise in your question and precise in the answer. Second Honorable supplementary. member asked. Second supplementary, please. Madam, he is standing. He is standing. How can I ask question? Issue when the state collects, we brought down the central excise. 9 states still have not brought down the excise. We are willing to take such steps as are necessary to control the price at the bunk. Honorable member, please ask your second Out of the supplementary. tax collected, 45% or so goes to the state government, 55 or 60%. I would. Honorable Minister, yes. Now second supplementary. Short question and Madam, as far as possible a short answer. Madam, the Honorable Chairman has been very liberal. I don't know why you seems to be so stiff about. Madam, my second supplementary, though he hasn't answered my first supplementary, which Second supplementary. I really Question. want the chair to protect the member, not the minister. Question, Here please. the other way is happening. Question, please. Sir, there have been a lot of reports about Russia offering discounts on the crude oil front. I would like to know whether there is any discussion that is happening between Government of India and Russia as to buy crude oil from Russia at a discounted rate. If so, what could be the facilities which you would be getting, and what could be the modus of payment? Will it be rupee, ruble, and what could be the reference point? Which currency would be the reference point? Honorable Minister. Madam, let me again reiterate that in a situation in which from the last 2 years characterized by the pandemic and in the last few weeks of a war or a military action taking place between Russia and the Ukraine, the government will explore all options which are available. There are reports and there are contacts. I myself have had a conversation with the appropriate levels of the Russian Federation. These are discussions currently underway. Several issues which will require both how much oil is available either in Russia or in new markets or in new suppliers which may be coming on the market, and issues relating to insurance, freight, and a host of other things, and the payment arrangements. I would be delighted, madam, on the first opportunity, whenever these arrangements are worked out between our oil companies and their counterparts in the Russian Federation, or our oil companies in Iran or other countries where more oil is coming up. It's a dynamic, evolving situation characterized by military warfare, when I would be happy if some of that military quotient is less here and I could get a chance to explain to my distinguished colleague in greater detail. Shri Shakti Singh Goel. महोदय, मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि यहाँ पे जो 3 साल का ब्रेकअप दिया है माननीय मंत्री जी ने, 2021 में कंपेयर टू 18-19 एंड 19-20 1.5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा आपने वसूल किया है, 1.5 लाख करोड़, और उसके बाद आप 5 रुपया और 10 रुपया कम करने के बाद भी जो अप्रैल सितंबर का जो आपका ब्रेकअप दिखा रहा है, कोई फायदा नहीं है, टैक्स उतना ही आप ले रहे हो। मेरी आपसे यही जानना चाहता हूं आपके जरिए मंत्री जी से कि आप पेट्रोल में 10 रुपया और डीजल में 5 रुपया कम करते हो। डीजल वो किसान और आम आदमी के लिए बहुत अहम है, तो डीजल को पेट्रोल के साथ आपने दाम कर दिए हैं। डीजल आज तक कम ही रहता था, जिससे किसान और आम आदमी को फायदा होता था, तो डीजल का शुल्क और कम करने के लिए सरकार तैयार है या नहीं? ऑनरेबल मिनिस्टर। मैडम, मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूंगा कि ये जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं 2010 में, पेट्रोल के जून 2010 में और
अप्रैल शायद 2014 में उसके आसपास ये डीरेगुलेट कर दिए गए हैं। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि ये जो दाम है, these will be determined by international prevailing prices. Administered price mechanism खत्म कर दिया गया था। क्यों कर दिया गया था, उसके क्या कारण थे, we can have a detailed discussion on that. आज स्थिति ये है मैडम कि हमने जब देखा कि कंज्यूमर को एकदम रिलीफ पहुंचाने की जरूरत है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 नवंबर 2021 को ये दाम कम किए और हमने और भी कदम उठाए और हम और भी कदम उठाने के तैयार हैं। His specific question, kindly answer specific question. Honorable Minister. नहीं, देखिए डीजल का दाम और करना है कम, नहीं करना है, these are decision। देखिए टैक्स इज वन कंपोनेंट, डीजल का तो किया है आप भाई, मैं समझाने, पेट्रोल का 5 किया और डीजल का 10 किया। अच्छा, दूसरा मैं बताना चाहूंगा, राज्यों ने नहीं किया। जब मैं वो कहता हूं तो वो जो राज्य है वो लोग, उनको थोड़ी सी ये चीज चुभती है कि 9 स्टेट्स, महाराष्ट्र ने नहीं किया, केरला ने नहीं किया और स्टेट्स ने नहीं किया। देखिए, the taxation is only one aspect of it. At the end of the day, we have to provide relief to the consumer at the point of consumption, and a number of steps have been taken, and prices have not gone up. I would like to share some price data. Kindly give a written reply to the member later, because we cannot have a debate. Madam, this is becoming a debate, sir. It's not, madam. Can I complete? This is crucial data. Short answer, please. I have the comparative data for USA, Canada, Germany, UK, France, Spain, Sri Lanka, and India. All those countries, the price of petrol during this representative period has gone up by 50%, 55%, 58%, 55%. India, it has only gone up by 5%. We should be rejoicing that. Instead, what we are hearing from the distinguished members is, why has it not gone up? You have done it. Kindly, Honorable Minister, kindly give a detailed reply later to the member. I think that would suffice. Shri GVL Narsivara. I'd like to thank Honorable Prime Minister and Honorable Minister for reducing the excise duty by 5 and 10 on petrol and diesel. But many states have not reduced VAT. And the highest prices of petrol are today and diesel are in Andhra Pradesh, Maharashtra, Telangana and Kerala. These are the 4 states where the highest prices are there for petrol, Question, diesel. please. And I hope they are equally. Question, please. No, this is a fact. And therefore, I would like to ask the Honorable Minister. Honorable Member, please. When states. Question, please. Yeah, my question is, these states have not been sensitive, because Honorable Member's question was the growing demand for lowering prices, and such a demand exists in Kerala also. And I would like to ask the Honorable Minister whether he would take up this issue with the concerned state governments and request them to reduce VAT so that the people can get relief. Honorable Minister. I would like to assure the Honorable Member that we have not only done that in the past, but I would be happy to continue that effort to use whatever limited margin of persuasion we have with the state governments to request them also to reduce the VAT chargeable by them. In some of the cases, the VAT is exceptionally high, and especially when the price is high. But I still see that one point which is being mixed, that the price at the bunk has not gone up. In India, it's gone up by 5%. Rest of the world, it has gone up by 50%. We should be celebrating that in the interest of our consumer, rather than doing nitpicking that you have done this and I have done that. Shri Anand Sharma. Shri Anand Sharma ji. Thank you, Madam Chair. I would like to ask the Honorable Minister, since the petroleum prices are a matter of national concern, and earlier in the previous question, the Minister of Civil Aviation was also referring to the high aviation fuel prices. It's a larger spiraling effect on the economy. When the GST was introduced, in principle it was agreed, when the government and the opposition talked, and the then Finance Minister, late Shri Arun Jaitley ji, that the petrol
products eventually would be brought under the GST. Has any progress been made by the government in the GST Council, and what is the response of the states? Will the Honourable Minister speak to the Finance Minister and try to have this matter resolved? Honourable Minister to reply. I can quote the specific article under which this has to be done. I think there have been several discussions. My own memory serves me right, and I believe also that the Kerala High Court at one stage specifically suggested that this be brought on the agenda of the GST Council. And since this requires the unanimity of the GST Council, the issue was, I think, taken up during a meeting of the GST Council, if I remember correctly, in Lucknow. And the proposal did not find favor. Sir, Madam, the honest God's truth is that states which are acquiring high revenue from the sale of petrol and petroleum products, and if I may also add liquor, they are normally reluctant to reduce their revenue from these two sources. And I'm particularly pained in one particular state, which I don't want to name here. They did not reduce the VAT on petrol, but they reduced all their revenue on liquor. So, well, these are priorities which state governments have to set for themselves, and these are also part of the philosophy on what you wish to encourage. But I am, with a sense of responsibility, I tell this House, the government has ensured, and the government will in the coming months also take whatever measures we have to make sure that our consumer gets relief to the extent we can. Now the price of oil has gone up from $19.56 a barrel to 130 at one stage. Today it's down to 109 or so. Those are situations emanating from a warlike situation. But within that, whatever space we have, wiggle space and margin of persuasion, we should continue to exercise that in the interest of the Indian citizen and the consumer. The same nature, and therefore they will be taken up together. Charge. Serial number 123. मेरा है सर. Minister to lay the answer on the table. Madam, statements both in respect of 123 and 125 have been laid on the table of the House. Charge. माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ. वैसे तो कहते हैं कि पेट्रोल और डीजल स्वतंत्र नियामक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें सरकार अवैध तरीके से कब्जा करके बैठी है. इनकी जब मर्जी होती है तब उसके दाम बढ़ा देते हैं, और जब चुनाव आता है तो दाम को स्थिर रखते हैं. पिछले कांग्रेस की सरकार के समय में 100 रुपये अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल की जब कीमत थी, तब कच्चे माल की कीमत थी, तब 73 रुपये के आसपास 1 लीटर डीजल पेट्रोल की कीमत थी. और जब कोरोना काल लॉकडाउन लगा, उस समय अमेरिकी डॉलर शून्य हो गया था, तब भी पेट्रोल के और डीजल की कीमत में कोई कमी नहीं आई. मतलब इनके पेट्रोल और डीजल पे इनका अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि कोरोना काल के समय ये कहा गया था कि पेट्रोल की कंपनियां धनराशि सरकार को देगी जिससे कोरोना का वैक्सीन लगेगा. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कोरोना काल में कितना धनराशि पेट्रोल कंपनियों से आया जिससे वैक्सीन लोगों को लगाया गया, जबकि बजट में 35,000 करोड़ की राशि वैक्सीन के लिए निर्धारित किया गया था. ये माननीय मंत्री जी स्पष्ट करें. मैडम, आपके माध्यम से मैं ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहूँगा कि सरकार का कोई इस प्रोसेस पे कब्जा नहीं है. अगर कब्जे की बात होती है, जब एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म था 2010 तक, जून 2010 तक पेट्रोल पे, जब डीरेगुलेशन हुई, डीरेगुलेशन के बाद द प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय द इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड, द prevailing insurance and freight rates, refining margins, dealer commission and the exchange rate. इसलिए इसमें सरकार का कोई कब्जे की बात नहीं है. Oil marketing companies in a situation of a deregulated process, they take the decisions. अब कभी ऐसा होता है कि कुछ पीरियड में उनकी जो रिकवरी है इससे वो बढ़ जाती है, और कुछ समय होता है, जैसे मुझे लगता है आजकल है, वो अंडर रिकवरी हो जाती है. इसमें ये मार्केटिंग डिसीजन उनको लेने चाहिए. जहां तक चुनाव के साथ ताल्लुकात है,
मैं आपको बड़े स्पष्ट तरीके से बताना चाहूंगा, और आपको तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी होती है। हमारे यहाँ तो 5 साल चुनाव तो होते रहते हैं। अभी 5 स्टेट्स में हुए चुनाव, आपको उसके बारे में जानकारी है। अभी और 5 स्टेट्स में आने जा रहे हैं, शायद अक्टूबर से वो भी होंगे। तो अगर किसी मार्केटिंग कंपनी ने जो निर्णय मार्केटिंग का लेना वो तो लेंगे। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि जब हमें लगे इस पे इन्फ्लेशनरी वो है, हमने दाम कम किया। 4 नवंबर 2021 में हमने अपने कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से और देशों के साथ मिलकर कुछ हमने क्वांटिटी भी रिलीज की, शायद नवंबर 2021। हम और भी कदम उठाएंगे, पर इन दो चीजों को जोड़ना बिल्कुल सही नहीं होगा। ऐसे तो चुनाव, जैसे मैंने कहा, अभी 5 चुनाव खत्म हुए, दूसरे चुनाव शुरू हो जाएंगे, पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को निर्णय लेने पड़े। अगर मान लीजिए, मैडम, एज आई सेड, द प्राइस वाज $19.56 ऑन 25th March 2020, went up to 130, it's down to 109. Oil marketing companies will take that decision. There will be other, they will proceed once they can no longer bear the, if they don't have the margin or the cushion, they will take the appropriate steps. Now, as far as we are concerned, we are doing a number of other steps. One, we are doing more ethanol blending. We have brought it, which was 1.4% in 2014. We brought it to 10%. We are doing other things. अब ऑनरेबल मेंबर ने ये भी पूछा कि वैक्सीन और रेवेन्यू खर्चा, तो आज मुझे शायद उम्मीद थी कि ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज हमने शायद 1.8 करोड़ वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्टर किए हैं, और इस पे 35,000 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो उसके दौरान, महामारी के दौरान, सिर्फ वैक्सीन पे खर्चा 35,000 करोड़ ही नहीं, लोगों को 80 करोड़ से अधिक हमारे नागरिकों को दिन का 3 समय का खाना, और एक स्कीम जो मार्च तक चल रही है, हमारे उज्ज्वला सिलेंडर्स। तो मैं अनेक ऐसी लिस्टें हैं जो महामारी के दौरान हमें करना पड़ा, और मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिए। कोई भी सरकार होती, अगर उनको, if they are sensitive to the requirements of the people, these are steps that you have to do when economic activity comes down. And I am grateful to the Honorable Prime Minister, and so is the nation, as has been witnessed in the events of the last few days. Second supplementary, Chair ji. KC Venugopal ji. Whatever may be the reason, despite the rising crude oil price, the price of petrol and diesel has not been increased since November. Whatever may be the reason, it is comparing to the period of January 31, 2021, January 1, 2021 and to July 9, 2021, you have increased 63 times the price of petrol and 61 times the price of diesel. Anyway, since November, we are very much relieved because the government is not increasing the prices even though crude oil prices are high. The country need an answer from the minister whether the relief is going to continue or not. Madam, decisions regarding increase and those 63 occasions, I would like to remind the honorable member, some were increased and some were decreased. On 5th March, a political leader made a statement that fill up your tanks quickly because petrol prices are going to go up because the election is over. And the consumption went up by 20%. It is a matter of shame that one statement led to hoarding of 20%. I think we should be conscious of that. I am very happy to name the person. Honorable Minister, kindly avoid any controversy and please be specific. No, answer we to the question. are talking about please prices. Avoid controversy and be specific. It's an amazing situation. I'm not yielding. Please sit down. I find it amazing. Please give us specific answer. I will give a specific answer. Instead of celebrating that prices have not gone up, my honorable friend is lamenting that they have not gone up. And another one makes a statement and hoarding takes place for 20% after that. So what is it? Should we be controlling prices or should we be making statements to encourage hoarding? Second this is the issue. क्वेश्चन पूछते हैं उसका रिप्लाई आप देना चाहिए, वो छोड़ के किसी ने ये कहा आपका बैरल कर लो,
किसी ने Honorable LOP, ये please. रिप्लाई नहीं है। Honorable रिप्लाई LOP. स्टेट पूछ रहे हैं कि ये I have prices already क्यों told the बढ़े? minister, क्या Honorable ये Minister. prices अब है, ये कंटिन्यू रहेगा क्या नहीं? ये क्वेश्चन Honorable LOP. किसी नौजवान ने ये किया वो किया। Next supplementary question, KC Venugopal ji. Madam, Please Madam, sit down and maintain Madam, I am order. happy. We will have the honorable member ask the second supplementary. Madam, I am happy. Madam, I am happy the Honorable Minister is trying to He is asking the question. appease his bosses using this platform of question hour. I am happy to know that. But the question is, the government is looting the country by imposing taxes on petrol and diesel. We want Then a whenever the question specific of the common people is coming, you are Honorable diverting the member. issue. Whether the government is going to Honorable stop this member. loot. Kindly ask the Let question. me answer this. Let me answer this. Who is looting the country? 97% of their candidates lost their deposits. That is what the country's answer to this is. 97% of their candidates lost their deposits. That is the answer. I am calling That is, no, and now also, this is their answer. Shri Binoy Vishwamji. I am calling the next member, Shri Binoy Vishwamji. KC Venugopal ji. Honorable member, please no controversial statements here. Shri Binoy Vishwamji. Mr. Britas. Mr. John Britas. Mr. John Britas, kindly don't disturb the house. Shri Binoy Vishwamji, please. Please maintain order. Mr. Vishwamji is asking the question. Please be seated, Mr. Binoy Vishwamji. Nothing is going on record. Binoy Vishwamji. Thank you, madam. Sir, not to have a controversy. Please, Binoy Vishwamji. Sir, the Honorable Minister. Sir, the Minister from his We will foreign check the service. records. Ministers also try to not Mr. Binoy Vishwamji, only what you say is going on record. Please ask the question. John Britashi, please say. We will see that. Please, Binoy Vishwamji. Please, let the honorable member ask the question. Yes, Binoy Vishwamji, only what you say is going on record. Please ask the question quickly. Yes, sir, my question is that, sir, those benches are creating problems here, not we Please people. ask the question. Please ask the question. The Honorable Minister, being from the background of foreign service, is well aware of the country called Venezuela. From that country, we used to import oil. In 2020, we imported from Venezuela 371,000 barrels of crude oil. And that country is still there. They still have the resources. Question, I please. asked the government Question, please. why that import was stopped and whether the government has a plan to restart that. Short and crisp answer, please. And crisp, since a reference was made to looting, I would remind you that oil bonds were released, oil bonds were floated. He has not raised that No, the question. previous, let me continue. No, we are only Oil bonds were floated for Binoy 1,40,000 Vishwamji's crores, question. on which we have had to pay Honorable 3,20,000 crores. we are That is concerned true. with only And Binoy 2G, Vishwamji's 2G, coal scam, CWC, I don't want to get into who's looting whom. But on Venezuela, I would like to... Honorable Minister, please don't create controversy. Come to the answer directly. I am Let's put a answering clear through you, question. madam. Venezuela is a country which was an oil supplier where the oil All other members, please sit down. All other members, please sit down. Madam, Venezuela is Mr. a John country Britas. which was subjected to sanctions by another country. It is our hope and expectation that the oil, not only from Venezuela but other countries under sanction, will become available, and that apart from the oil which will become available by countries who are not supplying on account of sanction, existing OPEC Plus will also increase their production, and I am hopeful
that we will all use collectively our margin of persuasion, including the honorable members, to request the international community to make more oil available, including from the country that the honorable member has named, Venezuela. As soon as that oil comes into the market, oil companies will enter into agreements. Equally, Iran is another country which, on account of a particular deal with the United States, I think it's a nuclear issue. There are reports in the public domain that that issue is also likely to be resolved. That will also bring more oil into the market. As far as the government of India and the oil companies are concerned, we are not floating any oil bonds, madam, and passing the generation up. We will take all the other steps. We are not indulging in any of those other things which are culture of impunity, which I mentioned, 2G, CWC, etc. We will take all legitimate steps to try and maintain the price of oil at the bunk at a reasonable level. Thank you, madam. Shri Mohammad Abdullah ji. है क्या? Yeah. Number 124. You're 123 or 125? 124. No, Ashok, then later. Yeah. Dr. Ashok Vajpayee ji. माननीय उपसभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा, देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट के मूल्यों में एक रूपता लाने के लिए क्या देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट को जीएसटी की परिधि के अंदर लाने पर सरकार विचार करेगी और इसके लिए प्रयास करेगी, जिससे कि निरंतर जो राज्य सरकारें अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर टैक्स अपने मन से लगा लेती हैं। Thank you for the short and crisp question. And I will also try and short, as I said in response to an earlier question, that the issue of taking it before the GST and having GST coverage on this will depend in equal measure on the state governments. And as I said, we tried once on an earlier occasion, and we did not find the response that was required in order to have GST coverage on this. Shri Vijay Sai Reddy. Thank you, madam. Any tax that is levied by the central, madam, Mike. Yes, it's on. Any tax that is levied by the central government is shared with the states, and any cess and surcharge that is levied will not be shared with the states. Exactly, that is the point I asked. Can the honourable minister explain to this August House on what parameters these taxes and cess on petroleum products is decided by the central government, and how frequently these the taxes and cess are reviewed and revised by the central government? Thank you. Thank you. I'm very happy my learned friend has asked this question. The precise formula, I think, would lie in the domain of the Honorable Finance Minister and the Finance Ministry bureaucracy, but I can share some facts with him. The total contribution of the petroleum sector to the exchequer for the years 2018-19 down to 2021 and April to September 21-22, the central exchequer and the state exchequer, I'll tell you. In 18-19, 5,75,632 crores, 60% centered, 40% went to the states. Similarly, the figure is 60%, 60%, 68%, then comes out 62%, 38%. It's not as if the taxes are only being levied by the center. Center legitimately levies taxes, excise, then uses them for Pradhan Mantri Awas Yojana, COVID, Shauchalaya, Ujjwala number. States also levy taxes, and I said the percentage is as high as 40% in most of the time. The formula which is used, I would be very happy to sit with my distinguished colleague and also learn from the Finance Ministry myself what is the precise manner in which central levies and state levies, how the sharing takes place. Thank you. Question 124. Shri Narayan Das Gupta. 24. Supplementary. मैडम धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा कि एक समस्या देश में कि कई इलाकों में सूखा पड़ता है, कई जगह बहुत बारिश होती है, और जो बारिश का पानी है उसमें फ्लड की सिचुएशन बन जाती है। तो क्या इन दोनों को हम बैलेंस से कहीं करने का प्रयास कर रही है सरकार कि जहाँ सूखा पड़ रहा है, जहाँ पानी वेस्ट होता है, एक जो सरकार की प्रधानमंत्री की भी और ये नदियों को जोड़ने का भी
एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसकी आज क्या पोजीशन है, और दूसरा जो बारिश में पानी इतना है और बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और आने वाले समय में और भी होगा, उसकी हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग की, ताकि वाटर लेवल जो है बराबर बढ़े और पानी की समस्या से हमें जो कहीं न कहीं निदान मिले, उसके विषय में मैं मंत्री से जानना चाहूँगा कि हमारी क्या आज की पोजीशन में स्टेटस है। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदया। मुझे लगता है कि पानी पे पूछा गया प्रश्न सदन में पैदा हुई गर्मी को कुछ कम करने में सहायक हो। माननीय सभापति महोदया, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय सदस्य का कि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला है प्रश्न पूछ करके। निश्चित ही सत्य है कि देश में विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों के चलते देश के लगभग 18% हिस्से में हर साल बाढ़ का प्रकोप होता है, लगभग 13-14% हिस्से में हर साल सूखा ऐसा आता है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स के कारण से इनकी फ्रीक्वेंसी और इरेटिक और स्कैंटी रेनफॉल्स के कारण से, इस रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस के कारण से इसमें निश्चित रूप से इजाफा हुआ है। माननीय अटल जी के समय ये सपना देखा गया था कि देश में आइडियली ये हो कि जहां डेफिसिट बेसिन में सरप्लस बेसिन से पानी ट्रांसफ़र किया जा सके, और उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिया था। उसके आधार पर एक कमेटी बनी थी आदरणीय सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय सरकार परिवर्तन हो जाने के कारण से 10 साल तक उस विषय पे आगे कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन उसके पश्चात 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में फिर उसमें तेज गति से हमने काम करना प्रारंभ किया। 31 ऐसे लिंक हमने आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफ़र करके इन समस्याओं का स्थायी समाधान किया जा सकता है। उनमें से अधिकांश की प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बनी, लगभग जो है 11-12 की उनमें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बन चुकी है। लेकिन उसमें से क्योंकि जल राज्यों का विषय है, राज्यों को आपस में समझौता करना है, मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं और आपके माध्यम से सदन को और देश को इसके बारे में बधाई दे सकता हूं। और यहाँ इस मंच पर, इस पटल पर खड़े होकर के मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री का और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, कि उन दोनों ने केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का समझौता करके एक नए युग का सूत्रपात इस देश में किया है। वेरी गुड। और इस बजट में 4400 करोड़ रुपए की इस परियोजनाओं को बजट में भी जो है स्वीकृति प्रदान की गई है। और मैं ये मानता हूं कि इसके कारण से बुंदेलखंड में जिस तरह से परिवर्तन होगा, उससे प्रेरणा लेकर के अन्य राज्य भी इस दिशा में काम करेंगे। जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 से लगातार इस विषय पर चर्चा की है। हमने जल शक्ति अभियान के माध्यम से, हमने अटल भूजल योजना के माध्यम से, और जो है 15वें वित्त आयोग में जो कुल एलोकेशन है उसका 30% एलोकेशन पानी से जुड़े हुए विषयों पर करके, नरेगा में 65% ऑफ टोटल एलोकेशन नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर करने के लिए टाइड अप करके इस बारे में इस तरह का वायुमंडल बनाने की कोशिश की। और मैं ये मानता हूं कि आज पूरे देश भर में इसको लेकर के एक नया जो है सोच डेवलप हुई है। लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर लोगों ने काम करना शुरू किया है। अनेक प्रदेशों ने भी इसमें बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है। सेकंड सप्लीमेंट्री, श्री प्रसन्न आचार्य जी। Madam, groundwater has been one of the important source of water for irrigation and drinking purpose also. But surprisingly, as per the CGWB survey report, it indicates that about 30% of the wells monitored, that has been monitored, have registered a decline in groundwater level in different part of the country. So, and secondly, Madam, in the mining sector and industries, they are also exploiting groundwater without any restriction. So this is posing a great danger. So I would like to know from the Honourable Minister, what steps are being taken, or has the government taken any step by making regulation or law to put a restriction in excessive use of groundwater in the mining sector, in the industries, and even for other uses? Honourable Minister. महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है। निश्चित रूप से भारत में
दुनिया का सबसे ज़्यादा भूगर्भ से जल निकालने वाला देश है और हमारी आवश्यकता की आपूर्ति का लगभग 65% हिस्सा हम भूगर्भ के जल से लेते हैं। पेयजल का लगभग 85% हिस्सा भूगर्भ के जल से आता है और उसके कारण से हमारे भूगर्भ जल स्रोतों पर दबाव भी है। 30% ब्लॉक्स की चर्चा माननीय सदस्य ने कही है। मुझे लगता है कि शायद उसके समझने में थोड़ा तकनीकी विषय होने के कारण से कुछ जो है वो फ़र्क हो सकता है। मैं माननीय सदस्य को आग्रह करूंगा, कभी मुझे अवसर देंगे, मैं इनके साथ बैठ करके और विस्तार से इन्हें एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो 30% ओवर एक्सप्लॉयटेड, क्रिटिकल एक्सप्लॉयटेड है, इनके जो है बेंचमार्क्स क्या हैं। जहाँ तक जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन से रोकने के लिए माइनिंग या इंडस्ट्री को या कॉमर्शियल यूसेस को जो है उसको रेगुलेट करने का विषय हमने ऑलरेडी उसका रेगुलराइजेशन के लिए जो है नॉर्म्स बनाए हैं और उसके ऊपर हम बहुत स्ट्रिक्टली जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमने टेलीस्कोपिक प्राइसेस मैकेनिज्म उसमें दिया है। जितना ज़्यादा पानी जितने ज़्यादा क्रिटिकल जोन में जो ड्रॉ करेगा उसको उसी के अनुरूप जो है सेस अदा करना पड़ेगा और जो पैसा आएगा उसको उस क्षेत्र में वापस ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए उपयोग हो सके, इसे सुनिश्चित। श्री कामाख्य प्रसाद ताशा। गुड आंसर। मंत्री जी ने एक विस्तृत आंसर दिया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मैक्सिमम पार्ट जो है नॉर्थ ईस्ट का और अदर पार्ट्स में आर्सेनिक है। नीचे आर्सेनिक का फ्लोराइड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जहां आसाम में कैंसर पेशेंट और किडनी पेशेंट का भी बढ़ोतरी हो रहा है। क्या मंत्री जी बताएं, क्या जो आर्सेनिक एंड फ्लोराइड्स एरिया है असम का बहुत सारे एरिया में ऐसा पाए जाते हैं, इसमें क्या व्यवस्था ली है? जो ड्रिंकिंग वाटर हो या इरिगेशन के लिए भूजल का पानी उसको व्यवहार करने के लिए क्या रेस्ट्रिक्शन है और क्या व्यवस्था लेने के लिए मंत्री जी ने सोचा? ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, हालांकि प्रश्न मूल प्रश्न से संबद्ध नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन पर हम काम कर रहे हैं और जल जीवन मिशन में उचित गुणवत्ता का पानी, समुचित मात्रा में पानी और निरंतर पानी हर घर तक पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर हम आगे बढ़ें। हमने राज्यों को नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम के तहत भी क्वालिटी सबमिशन में ये आग्रह किया था और उन्हें 2017 से लगातार एडिशनल फंडिंग दे करके कि जहां इस तरह की परिस्थितियां हैं, चाहे आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, हैवी मेटल्स है, आयरन है या और कोई तरह का सैलिनिटी या और कोई तरह का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, वहां प्राथमिकता से इस पर काम किया जाना चाहिए। अभी जल जीवन मिशन में भी हमारी प्राथमिकता क्वालिटी अफेक्टेड हैबिटेशंस को लेकर के है। हमने राज्यों को कहा है कि जहां स्थायी समाधान यदि वो नहीं कर पा रहे तो देश भर में जहां कहीं भी ऐसी परिस्थिति है वो कम्युनिटी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके एटलीस्ट पेयजल तक की जितनी मात्रा में पानी जो है वो ग्रामीण जनों को देश भर में उपलब्ध हो सके, इस दिशा में काम करें। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि लगभग सभी राज्यों ने उसमें तेज गति से काम किया है। एक आध राज्य को छोड़कर बाकी सब जगह पर बहुत इफेक्टिव काम भी हुआ है और आने वाले 2024 के अंत तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि देश में एक भी ग्रामीण आवास जो है वो नल के जल से विमुक्त न रहे, बाकी न रहे। और मैं ये मानता हूं कि इस दिशा में जिस गति से देश काम कर रहा है, आज 9 करोड़ घरों तक हम पीने का पानी पहुंचा चुके हैं। आने वाले समय में इसका स्थायी समाधान जो है वो देश को मिलने वाला है। श्री जी.सी. चंद्रशेखर जी। Regarding drinking water to Bangalore city, Bangalore city is having a population of 1.3 crore population today. See, now this is Bangalore city is required about 54 TMC water, but we have only 17 TMC water at present. See, now to store the flooded water to Bay of Bengal, we are constructing Mekedatu project. See, now because already Tamil Nadu, they have constructed 3 hydroelectric projects without any consultant of the neighboring state. Keep your question short. Now so I that wanted to know from answer. minister, see what is the government stand, central government stand, and what is the status of today? Because for this is a drinking water, the whole world says that drinking water is a priority. Question hour is over. House stands adjourned to meet at 2 p.m. रूस ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਿਆ ਨਿਹੱਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ।
Все, я уже закрыла, все, Настя. Я тебе пошел дальше их доказывать, это я полысло, блядь. फ्री सेवा फ्री समाधान बाबा कबीर खान जी काले इलम ते रूहानी इलम दे माहिर 2 घंटे विच घर बैठे एक फोन ते तुरंत समाधान करवाओ जिवें वशीकरण करना ਜਾਂ ਤੋੜਨਾ मन चाया प्यार घरेलू कलेश कीता कराया कारोबार विच घाटा विदेश विच पक्के ना होना माता पिता मनाउणा लॉटरी नंबर तुरंत निकलवाओ सौतन दुश्मन छुटकारा धोखा खादे लोग सानू तुरंत फोन करो मोबाइल नंबर 97797 19721 97797 19721